Welcome to the online lecture of Sharadvi More English High School. Okay, so students, today we'll be starting the practice set 6.1. Question number 1. If sine theta is equals to 7 upon 25, find the values of cos theta and tan theta. Okay, now look here. The value of sine ratio is given to you. Sine value given है आपको. Sine theta is equals to 7 upon 25, right? Now find the values of cos theta and tan theta. Now you have to find the value of cos theta and tan theta. So you have the two methods. Either you can use the first method or second method, right? So now let's start doing it. By using the trigonometric identity, sine square theta plus cos square theta is equals to 1. Okay, that identity we'll use for the solution. Six point one, question number 1. Now, sine theta is equals to 7 upon 20. No, and we have to find cos and tan. Cos theta and tan theta we have to find. Okay. Now we know that sine square theta plus cos square theta is equals to 1. Right? And the value of sine theta is given to you, that is 7 upon 25. So that we will substitute here, 7 upon 25 whole square. Cos value we have to find, so that's why we'll keep it as it is. So 7 upon 25 whole square plus cos square theta is equals to 1. Now cos square theta will be as it is, 1 minus 7 upon 25 whole square. Now what you have done here, you have shifted the term 7 upon 25 whole square to the right side. So here it is in plus, so it will become minus. Okay, so now simplify it and get the values for cos square theta. Okay, now we know that square of 7 is 49, right? And square of 25 is 625. Okay, so cos square theta is equals to, now 1 minus 49 upon 625. So आप इसको कैसे subtract करोगे? You will cross multiply 625 into 1. 625 into 1 will be 625 minus 49. 625 minus 49 upon 625. Okay. So आप 625 में से 49 subtract करोगे, so you will get 576. Okay. क्या मिलेगा आपको? 576, right? 576 upon 625 cos square theta. Now we got the value for cos square theta, but what we are supposed to find? We have to find the value of cos theta. So you have to shift the square to the right side, right? So when you will shift square to the right side, it will become square root. So therefore cos theta is equals to square root of 576 upon 625. Now 576 is the square of 24, right? 24 का square है ना 576. So square root क्या आएगा? 24. And 625 किसका square है? 25 का. So square root is 25. So therefore cos theta is equals to 24 upon 25. Okay. So first ratio you got the value. Cos theta is 24 upon 25. Now sin value given है, cos value यहाँ पे आपको मिल गई, right? Cos की value मिल गई. Now what we are supposed to find next one? Tan theta, and we know sin upon cos is 10, right? Sin upon cos is 10. So just take the ratio of sin and cos values, you will get the value for tan theta. Okay. So sin theta is 7 upon 25. Cos theta is 24 upon 20. Okay. Now what you will do?
7/25, ये डिवीजन अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो जो नीचे वाला टर्म है इट विल बिकम द अपोजिट, राइट, रेसिप्रोकल. So 25/24, right? So 25 will get cancelled. Simply you can cancel it right directly also, right? So here you got the final answer as 7/24. Means tan theta की value क्या मिली आपको? 7/24. Okay? Tan theta is equals to 7/24. Got it? Understood properly? कैसे फाइंड किया आपने कॉस की वैल्यू? फर्स्ट यू हैव यूज्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. यूजिंग दैट आइडेंटिटी आपने sin की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे और cos की वैल्यू फाइंड करे. गॉट इट? Then after that you have taken the ratios of sin and cos values to got the value for tan theta. Okay? So therefore cos theta is 24/25, tan theta is 7/24. Got it? Now you can use alternative method also, that is Pythagoras theorem, right? Pythagoras theorem वाला जो method है मैंने आपको कल explain करी थी example में, वो भी use कर सकते हो. Got it? Second question, question number 2. If tan theta is equals to 3/4, find the values of sec theta and cos theta. Okay, आपको tan theta की वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड करना है sec theta and cos theta की वैल्यू. ओके, नाउ आपको पता है tan थीटा की वैल्यू गिवन है और sec फाइंड करना है. सो चेक करना है कि tan और sec की कौन सी आइडेंटिटी है दैट वी कैन यूज हियर, राइट? सो अभी इसके पहले हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े, उसमें फर्स्ट वन के बाद नेक्स्ट वन जो थी 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट, दैट इज sec स्क्वायर थीटा. हियर इट इज गिवन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. तो ये वाला आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट? यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो, और ये वाला जो सेकंड मेथड है वो भी आप यूज कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द सेकंड क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. गिवन दैट tan theta is equals to 3/4 and we have to find the values for sec and cos. Okay, now we know the trigonometric identity 1 + tan square theta is equals to sec square theta. Okay, 1 plus tan की value given है, that is 3/4. So you will substitute here 3/4 square is equals to, okay, now take the square of 3/4. Okay, so 3 का square हो जाएगा 9 and 4 square 16 is equals to sec square theta. Now what you have to do, you have to add this integer and fractional number. So what you will do, you will simply cross multiply. 16 ones are 16, so 16 plus 9 upon 16. Now when you will add 16 and 9, you will get 25. So 25/16 is equals to sec square theta. Now आपको फाइंड करना है sec theta की वैल्यू, राइट? सो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है आप वो क्या करोगे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे अनदर साइड पे. सो it will become square root, right? 25/16 is equals to sec theta. Okay, now 25 का square root 5 and 16 का square root 4. So therefore we got the value for sec theta as 5/4. Okay, you will write here, therefore sec theta is equals to 5/4. Okay, understood properly? Now look, we know the value of tan and we know the value of sec theta. अब next remaining one क्या है, आपको find क्या करना है, cos theta, right? And we know the relation between cos and sec, right? Cos is the reciprocal of sec theta, right?
cos को आप ऐसे एक्सप्रेस करते हो ना, इसके पहले हम लोग देखे cos theta is what 1 upon sec theta, right? So now take the reciprocal of the value. So therefore cos theta is equals to 1 upon sec theta की वैल्यू क्या है 5 upon 4 means reciprocal of 5 upon 4 that is 4 upon 5. Okay. Okay, so now you know the value for sec theta, that is 5 upon 4, and cos theta is equals to 4 upon 5. Okay, so this solution we have done using the trigonometric identity. Okay, you can do this also by using the Pythagoras theorem. Now next question, question number 3. Third question, if cot theta is equals to 40 upon 9, then find the values of cosec theta and sin theta. Okay, now look here, आपको cot theta की value given है, cosec and sin की value find करना है. So now you know the relation between cot and cosec, right? इसके पहले हमने जो trigonometric identities पढ़े उसमें से जो second one है, that is the 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Here 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. So that we will be using in third question. आपको cot की value given है, cosec find कर लोगे. Okay. Question number 3. Now cot theta is equals to 40 upon 9. Question number 3 क्या है, इसमें आपको cot theta की वैल्यू गिवन है, cot theta is 40 upon 9. अब फाइंड करना है आपको cosec theta and sin theta की वैल्यू, राइट? cosec फाइंड करना है and sin. Okay, so now we know the trigonometric identity, that is 1 plus cot square theta. Now the screen is visible. 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Okay, now you know the value of cot theta, so substitute it here. That is 40 upon 9. 40 upon 9 whole square is equals to cosec square theta. Okay, so 1 plus, so 40 का square करें, so what is the square of 40? That is 1600, and 9 का square है 81. Okay, now simplify it. Okay, 81 ones are 81, 81 plus 1600, 1600 upon 81 is equals to cosec square theta. Okay, now 81 plus 1600 is 61681 upon 81 is equals to cosec square theta. Means आपने 1600 में 81 ऐड किया, so you got the value 1681 and then denominator में 81. Now you have to find the value for cosec theta. So you have to shift the square to left side, so it will become square root. Okay, so cosec theta is equals to square root of 1681 upon 81. So square root of 1681 is what? 61, right? 41. So here you will write 41 and 81 का square root है 9. So cosec theta की value क्या मिली आपको? 41 upon 9. Okay. So therefore cosec theta is 41 upon 9. Now what you have to find? You have to find the value of sin theta. Okay. So sin theta is the reciprocal of cosec theta, right? So by using that formula, you can easily get the value of sin theta. Cosec theta is 41 upon 9 and sin theta
is 1 upon cosec theta, means 1 upon 41 upon 9. Okay, so means reciprocal of 41 upon 9, so that is 9 upon 41, means therefore sin theta is equals to 9 upon 41. Okay, so here we have completed the question. आपको cosec theta की वैल्यू मिल गई 41 upon 9 and sin theta की वैल्यू 9 upon 41. So the third question is completed. Next question number 4. Fourth question. If 5 sec theta minus 12 cosec theta is equals to 0, find the values of sec theta, cos theta and sin theta. Okay. Now instead of giving the ratio, आपको directly ratio given है ना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में, बट हियर द एक्सप्रेशन इज गिवन sec 5 sec theta is 5 sec theta minus 12 cosec theta is equals to 0, and you have to find the value of sec theta, cos theta and sin theta. Okay, now so using this expression, first of all you will obtain the ratio. Okay, after that you will simplify the values of sec, cos and sin. Okay, 6.1 question number 4. Given expression is 5 sec theta minus 12 cosec theta is equals to 0. Okay, now call करो. Okay, now what you will do, you will shift 12 cosec theta to the right hand side. Okay, तो यहाँ पर क्या है माइनस में 12 cosec theta, राइट? तो यहाँ राइट साइड पे आप जब इसको शिफ्ट करोगे so it will become plus 5 sec theta is equals to 12 cosec theta. So 5 sec theta is equals to 12 cosec theta. What you have did here? आपने -12 cosec theta को राइट साइड पे शिफ्ट करे. ओके, सो इट विल बिकम 12 cosec theta. अब आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू हियर, यू कैन सिंपली शिफ्ट द वैल्यूज टू द, अब देखो sec theta यहाँ पे न्यूमरेटर में, राइट? तो जब आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे sec theta के पास cosec theta को, सो इट विल बिकम डिवाइड, राइट? यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा. सो cosec theta यहाँ पर 12 है और 5 यहाँ पर आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर. ओके, so sec theta upon cosec theta is equals to 12 upon 5. Okay, now आपको डिवाइड करना है sec and cosec को. So अब sec theta divided by cosec theta is equals to 12 upon 5. Okay, now look, sec theta को आप 1 upon cos एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? sec theta को आप 1 upon cos ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 1 upon cos theta, and cosec theta को आप 1 upon sin theta लिख सकते हो, राइट? So it will become 1 upon sin theta is equals to 12 upon 5. Okay, now डिवाइड के जगह पे आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई लिख सकते हो, राइट? और जब आप डिवीजन की साइन मल्टीप्लाई से चेंज करते हो तो सेकंड टर्म का आइदर द फर्स्ट और सेकंड टर्म आपको क्या लेना होता है? फर्स्ट या सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल लेना होता है. सो यू विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड टर्म. So it will become sin theta upon 1, right? 1 upon cos theta multiply sin theta upon 1. Okay, so now multiply 1 into sin theta, sin theta, cos theta into 1, cos theta, that is equals to 12 upon 5. Now sin upon cos, we know that sin upon cos is 10, right?
So here we got the value for tan theta. Okay, so tan theta is 12/5. मीन्स आपको यहाँ पे इसके पहले डायरेक्टली वैल्यूज गिवन थी, बट यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन गिवन था, आपने उस एक्सप्रेशन से क्या किए, वैल्यू ऑब्टेन करे. ओके, बाय डूइंग द एडजस्टमेंट्स. ओके, सो नाउ यू नो द वैल्यू फॉर tan theta. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec, cos एंड sin. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले tan theta and sec theta की आइडेंटिटी यूज करोगे. 1 + tan square theta is equals to sec square theta. ओके, 1 + tan square theta is equals to sec square theta. ओके, नाउ tan theta की वैल्यू क्या है, 12/5. So 12/5 square is equals to, okay. So now take the square of 12, square of 12, that is 144, and square of 5 is 25. Okay. Now 25 ones are 25. 25 plus 144. 25 plus 144 upon 25 is equals to sec square theta. Okay, 25 plus 144 will give you 149, and denominator will be as it is. So therefore sec theta is equals to square root of 149 upon 25. Means आपको क्या करना है, स्क्वायर को शिफ्ट करना है, so it will become square root. So now 144 plus 25 is 169. Okay, so now square root of 169 upon 25. So 169 का square root है 13 and 25 का 5. So you know the value for sec theta now. So that is 13/5. Okay, आपको गिवन था, गिवन आइडेंटिटी से आपने क्या किया, tan की वैल्यू फाइंड किया. देन यूजिंग द tan यू नो द वैल्यू फॉर sec theta. अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है cos theta और sin theta की वैल्यू. ओके, सो नाउ यू नो द रिलेशन बिटवीन sec एंड cos. दैट इज cos theta is 1/sec theta. ओके, मीन्स आपको क्या करना है, जो sec theta की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल लेना है. सो दैट इज 13/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/13. ओके, so cos theta is equals to 1/13/5, means reciprocal of 13/5, that is 5/13. Okay, second value आ गई cos theta की value. Now remaining one is what, sin theta. Okay, now we know that sin theta is 1/cosec theta. बट आप अभी हम लोग ने जो भी वैल्यूज फाइंड करे उसमें से हम लोगों को कोई भी कोसेक की वैल्यू नहीं पता है, राइट. कोसेक की वैल्यू नहीं पता है आपको. फाइंड, आपके पास cos की वैल्यू है. So using the cos value, you can easily find the sin value by using the trigonometric identity, sin square theta, cos square theta, right? So sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Okay. Now cos theta की वैल्यू आपको पता है, that is 5/13. Okay. Square of 5, 25. Square of 13, 169. So sin square theta is equals to 1 minus 25/169. (69 into 1) 169 minus 25/169. Okay, अब 169 में से आपको क्या करना है, 25 सब्ट्रैक्ट करना है. So you will get 9 minus 5 4 6 2 4 144. Okay, 144/169. Okay, आपको साइन की वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा की. So you will shift the square to the right side, so it will become square root. So therefore
Sine theta is equals to square root of 144 upon 160. Okay, 144 का स्क्वायर रूट 12, 169 का स्क्वायर रूट, therefore sine theta is equals to 12 upon 13. Okay, so now you know the values for sec, cos and sine, that is 13 upon 5, 5 upon 13 and 12 upon 13. Okay, so the question number 4 is completed.